Hi everyone, I hope you guys are keeping safe and healthy. The lockdown has not just affected our mental health but also our physical health. We are unable to go out, we are unable to work out, we are trapped in this vicious cycle of working, eating, and sleeping. So, to restart your journey today, we have with us Mr. Devesh Divedi, who has been working out for long and who recently recovered from COVID. He understands the importance of health and can give you the right advice that you need. Welcome to the show. Okay, so let me talk about you first. You've been doing this for how long? I, like, specifically going into this fitness field, I started when I like around 3 or 4 years ago. Okay. So when I moved to Delhi, what happened is I used to like go out, drink a lot, and like eat lots of junk food. So when I was in my early 20s, I could say 20, 24 years, it was not affecting me. I was skinny, fat type of guy. I used to be skinny, but I had fat, but it was not showing because I was in that high metabolic, you could say, but more of activity kind of zone. But then when I moved to Delhi, I started working that 9 to 5 job. So ended up just drinks, food, job, nothing else. So I had put on a lot of weight, a lot of fat. So eventually one day I just got a kick up my butt, and I was like, okay, let's try this thing that I had given a try. So I tried working out a couple of years ago when I was in college, but then I never got the hang of it. I was more of a sports playing person. Okay. So when I started again onto that field, there was nobody who was there to help me out. I was like all on my own. I started doing my own research. YouTube, Google, best place to do any kind of research. You have everything available if you find the right people to follow. They'll give you the exact knowledge that you need. So I just kept on digging. I had a few seniors who were in this kind of field, so they did help me out with, you can say, the supplementation part of the process. That is it, nothing else. So whatever I've learned it on my own. So slowly, eventually, I started doing the same mistakes that everybody does. Go to the gym, start lifting weights, whatever you find, whatever you think of doing, you can do anything. Like people do random things, but there is a procedure and a proper plan that you have to follow in order to achieve something. You cannot just go randomly lift weight, start running 5 days a week, and you will not be able to get what you want. So, some of the trainers that you have in your gym, they do help. They do give basic knowledge. Some of them are just there to like sell you out on your, you can say, personal trainings. That's it. So that's when I started. Slowly, I got the hang of it. I developed the interest in around 2 to 3 months. That's all the time I took. So like 2 to 3 months, initial 2 to 3 months were like very difficult. I used to skip. I was like, oh, I'll not go to job. I'll just skip it today. I'll do it tomorrow. I still was not eating clean. You could say the eating clean thing. I was still eating anything I felt like, everything basically. But still, the first 3 months were like very difficult. But after 3 months, it became a habit because in the first 3 months you do see changes, even if you're not cutting out on food and you're still trying to do something in the gym, your body will change. When you start seeing those changes and you start observing them, you will definitely get more motivated. So that is one thing that I kept in mind. I did start taking I was under the impression that all you need to do is just go work out for 2 3 months, eat a lot of supplements, and you will get your physique. That is what I had in mind. I think because that is what the common scenario is. What normal common people think. That is what happens. People like me also think that way because मैंने खुद एक nutritionist से लिया था help and it helped me for 3 4 months, but then I was sick of it and I had to get when I just stopped eating healthy and I was back on the junk. I'll tell you what happens is even मैंने भी contact किया. I contacted a nutritionist through, I don't remember. I remember contacting her through some online portal. Okay. So she told me that she asked me my measurements, what weight are you on, like how much time have you been going to the gym, what you eat, what all you eat, and all. So I give her an example. This is my diet. I eat this thing. Okay. She was like, okay, what we'll do, remove oil from your diet, we'll remove this from your diet, we'll remove that from your diet, and I'll make sure that you reduce your body fat percentage. I was a bit convinced. I wanted to hire her because एक friend था मेरा, if you remember, there was another batchmate of mine, Abhyuday. Okay. So he was also into this field. During the same time I got into this field, he hired a dietitian.
So I was, you can say, tempted. मन बहुत कह रहा मेरा कि यार I have the money, I should hire one. But in the end, I was like, no, let's not just rush into it. मैंने कहा let's wait, give us more time, because I was learning more and more day by day. I used to like spend hours, like even now, whatever free time I have, whenever I open up my laptop or you can say mobile, first few things that pop up in my feed is something related to fitness. Either some new kind of workout that's coming into play, some new fitness influencer is coming up and showing some knowledge. So you have to like not get involved that much that I am involved, but in order to live a healthy life, you should have some basic knowledge. That is what my understanding is. You don't need to go to the gym to be healthy. That is simple basic thing that I follow. Because lockdown की वजह से it has become a vicious cycle. People eat, they sleep, they work, and they have no time left for fitness. So see, I'll tell you, this excuse of no time left is something I do not accept. Why? Because I'll tell you, आप job कर रहे हो, right? You work for, say, 30 days or 10 to 12 hours, whatever your timing is, right, and you get paid in cash for that work that you are doing. Right. If you can like take time out of your life to earn money, the same thing happens with your body. You have to work 40 minutes. That is it. Minimum, you could say daily 40 minutes. You at least have to give 40 minutes to your own health in that exercise format, or you can say being like any kind of activity, physical activity that you're doing for those 30-40 minutes. You are working for your body, and your body will repay you in the form of health. So it is something that you are investing right now. आप जितना मर्जी काम करके जितना मर्जी पैसा कमा लो, in the end, if you end up being obese, fat, and having lots of medical issues with you, you won't be able to survive long. You eat unhealthy food, you will go on medications. Those medications will have side effects. आपको decide करना है. And that will become a vicious cycle. Hospital. Correct. So you have to decide. You can like, it is not a matter of you don't get the time. It is what you choose. You can spend 15 minutes less on your phone, 15 minutes less on your laptop. Take 30 minutes for yourself. Do nothing. Just do any kind of physical activity that you like. It's not that आपको वही करना है, जिम ही जाना है, दौड़ लगानी है, वॉक करना है, योगा करना है. आपको जो अच्छा लगता है आप करो. Your body needs to be active. And scientifically proven hai, the people who are more lazy and whose body tend to be more at rest are more affected in cardiac, like heart problems उनको बहुत ज़्यादा होती है and बहुत जल्दी होती है. तो आप चाहो like आजकल technology है, you might survive a heart attack, you might not survive. All that money that you earned will go where? You'll not be able to do anything. Correct. So health is something that you should not play with. It is something you should take very seriously. That's a very good advice. But if somebody wants to begin, as a beginner, आपने जैसे बोला कि बहुत problems आती है, you tend to escape it, you tend to make excuses. So how to make sure that you are very disciplined, you are punctual about your training or whatever you're doing? Okay. So what happens is, even after 4 years of continuous workout regime, when I had COVID, I was not doing anything for 20-25 days at all. After 25 days, when I felt that I have to work out again, I had the same body response that every normal person जिसको start करना होता है कि यार आज नहीं कल. I did skip many days. मैंने like okay, Friday I'll start it on Monday. Monday किया, Tuesday skip कर दिया. Everybody goes through the same phase. It is because we are not designed in a way that हमें वो काम करना है. Body का है, you save energy. It is naturally हमारी body बनाएगी to save energy, conserve energy. Correct. आपको एक दिन जिस दिन मोटिवेशन लगता है, आप एटलीस्ट उस दिन का सोच के उस दिन जाके करो. नेक्स्ट डे नहीं लगता तो डोंट थिंक कि आपका फेल हो गया, आप फिर से नहीं कर सकते, इससे फिर परसों कर लेंगे और परसों भी नहीं गए. जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि एक दिन स्किप होने से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन बहुत कुछ खाने से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन कम खाने से कुछ नहीं होने वाला. इट इज अ लाइफस्टाइल. यू हैव टू लिव दैट लाइफस्टाइल. आपको हेल्दी रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You have to take time out of whatever schedule you have. You don't have time at all, understandable. Usme bhi you can do minor, like very minor things to change what you are doing. So it can also improve your body health, mental health, and
in the long term obviously physical health it will affect. Initially start करने के लिए किसी को भी स्टार्ट करना है, सीधा आप जाके जिम मेंबरशिप मत ले लो. आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ मैं जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगी, मैं पतला हो जाऊंगा, करा देगा ट्रेनर, करा देगा, कोई नहीं कुछ कराएगा. आपको खुद करना है. आप अगर अपने ऊपर 20-30 मिनट्स एफर्ट डाल सकते हो डेली का, तो आपको बस वो 20-30 मिनट्स के लिए आपको करना है. यू टेक इट लाइक यार आपको डोंट हैव कैसे आपको एग्जांपल, समथिंग दैट यू डोंट लाइक टू डू, यू स्टिल डू इट फॉर 30 days. For that 20-30 minutes you continuously do it for 30 days. आपका mental adjustment ऐसे हो जाएगा कि after 30 days you will be like हाँ it is my normal routine, it is my normal cycle, I have to do that. Yes. So basic है कि first 30 से 45 days आपको skip कर दिया आपने, कोई इश्यूज नहीं है, next day से continue करो. But उसको first 45 days में आपने जितना उस पर प्रेशर डालना है, आपने जितना प्रेशर first 45 days में उस रूटीन में जाने में लगा लिया, उतना आप सक्सेसफुल हो. Okay. 45 days is required to make it a habit. Once it becomes a habit, you will obviously take out more time. आप अपने आप ही उसमें और इन्वॉल्व हो गए. Secondly, जिम जाके कोई आपको पतला नहीं कर सकता. आप खुद को पतले कर सकते हो. सिंपल, आप खुद को हेल्दी कर सकते हो. कोई आपको कुछ करा के कुछ मैजिक पाउडर पिल एक्सरसाइज कुछ नहीं होता. It is nothing. अच्छा, what is the percentage involvement of nutrition? मतलब let's say अगर मैं workout daily करती हूँ 1 घंटा, so how much do I have to be careful about my food? क्योंकि मैंने ये गलती की है कि मैं workout 2 घंटा करती थी और मैं खाती कुछ भी थी, so it wasn't affecting my body at all. You can say it is 90% तो बहुत ज़्यादा होता है, but scientifically it is around 60-70%. But majorly it is food, what you eat. Right. Basic laws of thermodynamics. Energy is neither created nor destroyed. You eat food, it creates energy. If you're not utilizing it, you're not burning it, it is going to get stored. Right. Simple. So if you say आपने बहुत सारा वर्कआउट किया, ठीक है, और आपने फिर आके उतना ही you can say overeat कर लिया. High calorie food, you can say, not even high calorie, very high calorie. High calorie is also okay in some cases, but then eating less is wrong. Eating more is also wrong. आपकी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके इन प्रोपोर्शन यू डिसाइड कि आपको किस तरफ लीन करना है, उस हिसाब से आप खाओ. इट इज नॉट कि मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया, मैं आया, मैंने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया. We estimate the calories in a pizza and burger to be very low, and they are very very high. Very high. Plus what happens, आपके जब आपने एक्सरसाइज किया, आपकी बॉडी इज लाइक अ स्पॉन्ज. ओके, इट इज व्हेन यू एक्सरसाइज 1 hour 2 hour whatever, you think कि आपने स्पॉन्ज को स्क्वीज करके you have drained it out. ठीक है, now whatever you need to put in your body, it is going to absorb. Okay, so when we eat high calorie, high fat, or you could say high in sugar food, वो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस करता है, इंसुलिन को स्पाइक करेगा, एंड जो नॉर्मल बॉडी के प्रोसेस हैं उसमें ऑल्टरेशंस करता है. आपकी बॉडी को कंफ्यूज करता है कि आई हैव गॉट द एनर्जी सोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, जो मेरी डिप्लीटेड थी. हेंस आपकी बॉडी विल लाइक स्टोर व्हाटएवर इट इज गेटिंग एंड नॉट यूज टू रिकवर. Right. So eating clean जो कहते हैं, it is nothing. You have to eat. You can eat anything. I eat French toast almost 3, 4, 5 days a week. In my breakfast meal, I eat French toast, and I can make it like there are simple recipes that you can do. छोटे से changes होते हैं, you can easily change and make your food tasty, more filling, less in calorie, but it should be more filling because you will not be able to do it. जिंदगी भर नहीं कर पाओगे if it is bland food. ठीक है, you cannot survive on chicken, rice and broccoli. Simple. Body builders do that क्योंकि उनको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में एक स्पेसिफिक टाइप का फिजिक चाहिए. उनकी बॉडी इज ऑलरेडी, यू कैन से 70 to 80% is already in shape. To get from 80 to 100% in shape, they follow that type of diet. Okay, your body is not in that 80% category. Neither is mine. Neither is anybody normal who is going around. Because our goal is not to get that 100%. Our goal is to get to that 80%. So those bodybuilders have already been living a healthy lifestyle. They eat normal, healthy throughout their life. Maintain that 80% wala body.
आफ्टर दैट व्हेन उनको कॉम्पिटिशंस एंड ऑल करने हैं, देन दे डू दैट. सो वी हैव दैट मेंटालिटी कि यार नहीं, ये तो प्रोटीन खा लिया, सप्लीमेंट खा लिए, बॉडी बन गई. नहीं होता. उन्होंने जितनी मेहनत करी है, वो जितना क्लीन खाते हैं, वो जितना मेंटेन करते हैं, आप पहले उस लेवल पे आओ, उसके बाद आप किसी और को जज करो. बेसिक किसी के आने में आपको यू विल टेक टाइम. सो मेन है न्यूट्रिशन इज लाइक बेसिक ग्राउंड. किसी भी चीज की नींव रखी जाती है. न्यूट्रिशन इज द लाइक पिलर्स ऑफ योर हेल्थ. न्यूट्रिशन इज नॉट ऑन पॉइंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. और कौन-कौन सी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे इफ आई एम स्टार्टिंग टुमारो, सो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड? एक तो आपने जैसे बोला रेगुलरिटी और न्यूट्रिशन हो गया, इसके अलावा मुझे क्या-क्या ध्यान रखना है? ओके, पहले बात तो ये फैट डाइट्स जो चलती हैं कि आई एम फॉलोइंग अ कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट एंड यू कैन से इंटरमिटेंट फास्टिंग. राइट. ऑल दीज आर फैट डाइट्स. इन द एंड आपकी बॉडी का हाउ डज इट वर्क? आपकी बॉडी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है कि इतने कैलोरीज उसको डेली चाहिए. ओके, एंड व्हेन यू सी आपके चेंजेस होते हैं, वो एक वीक का जज किया जाता है. तो एक वीक का एवरेज आपकी बॉडी का कितना रिक्वायर्ड था, उसमें से आपने कितना खाया और कितना बर्न हुआ. सो आप एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि ओके मैं आज से चलो मैं आई विल स्टार्ट वॉकिंग 15 मिनट्स मिनिमम दे रहा है, आई विल गो फॉर अ वॉक फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, एंड आई विल कट यू कैन से bread, roti, chapati, I'll cut this, I'll cut that. It will not be possible for you to do that because your body is already working in certain form. Cutting out food is not the answer. You do whatever you are doing already. आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, keep that already like with you. But first start walking for 15 minutes every day. When you start walking for 15 minutes every day, for example, आपकी बॉडी को 1000 कैलोरीज चाहिए, आप 1000 कैलोरीज से थोड़ा ऊपर खा रहे हो, 15-200 के आसपास खा. ओके, एंड यू आर मेंटेनिंग सम वेट, फॉर एग्जांपल 70 kg आपका वेट है. ओके, एंड आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आप कोई वर्कआउट नहीं, कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, जीरो लाइक मिनिमम एक्टिविटी लेवल. व्हेन आप उस एक्टिविटी लेवल से 15 मिनट्स आप ऐड करोगे वॉकिंग का, आपका जो 15-20 मिनट्स ऐड हुआ, उसमें आपका एक्टिविटी लेवल ऑन एन एवरेज जो वीक का है वो आपका इंक्रीज हो गया. ओके, आप खा उतना ही रहे हो, आप एक्स्ट्रा खा रहे थे, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड इतना था, बट आपने वर्कआउट करके क्या किया, आपने उस गैप को कम किया. ओके, वो जब गैप आपका कम होता है, धीरे 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 व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, योर बॉडी एक्चुअली चेंजेस, क्योंकि इट वाज मेंटेनिंग दैट वेट एंड दैट बॉडी कंपोजिशन जितना आप खा रहे थे उसमें, बट आपने उसमें एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर दिया उसी फूड. यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन दैट आल्सो, बट slowly क्या होती है, बॉडी इज वेरी एडाप्टिव. आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर इज लाइक वेरी एडाप्टिव. आपका विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम आपकी बॉडी उसमें अडाप्ट कर जाएगी. फिर क्या होगा, आपका 15 मिनट्स जो आप वॉक कर रहे थे, वही सेम वेट बॉडी कंपोजिशन आपके आके रुक जाएगा उतना ही खाने पे, क्योंकि आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी एनर्जी कंजर्व करने में. वो मेटाबॉलिज्म को स्लो हाई करके एनर्जी कंजर्व कर लेती है. So that is why it is said कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा. It is a combination of both. Right. So आप स्टार्ट करो स्लो. आप एक वीक सिर्फ एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी जो भी आपको feasible हो, any kind of activity, whatever is feasible, do it slowly. Then first see कि आपकी बॉडी की कैलोरीज, डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है. ओके, फिर आप अपना चेक करना शुरू करो, like what all you are eating in a day. Right. You have to measure calories of food. If you're not doing that, you can lose weight, you can attain some physique, but it will go and stagnate. आपका वो एक जाके pause होगा ही होगा if you're not calculating it. तो आपको चेक करना है your body is maintaining weight at कितना normal आपका resting metabolic rate है. ठीक है, example, okay, so I'll take my own example. Mera is around 2300 calories. Okay, for past 6 months I am eating 1700-1800 calories. मैं कम खा, my weight is still constant as it was 4 years ago. My weight is constant from the past 4 years. मैं 4 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने कम खाया, ज्यादा खाया, हेल्दी खाया, अनहेल्दी खाया, बट उससे चीज नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता था तब मैं अनहेल्दी खाता था, तो मुझे पता नहीं था. फिर मैंने जब हेल्दी खाना शुरू किया तब मैंने वर्कआउट का टाइम थोड़ा कम किया, तो मेरा फैट लॉस हुआ एंड सेम टाइम पे मसल गेन हुआ. माय वेट रिमेन द सेम. ओके, तो आप स्लोली स्टार्ट करिए,
थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, देन आप चेक करिए कि आपके फूड में आप फूड इनटेक किस चीज़ का कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उसको मेजर करिए, उसका कैलोरीज कितनी है वो चेक करिए, एंड बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपका 1000 है मेन रिक्वायरमेंट एंड आप 2000 खा रहे हो, तो आप 2000 से सीधा 1000 एक दिन में मत आओ, दैट विल नॉट बी एबल, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। यू स्लोली ड्रॉप 200 कैलोरीज आप ड्रॉप करिए, 2 वीक्स का गैप लेके 200 कैलोरीज और ड्रॉप करिए, स्लोली आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए और स्लोली कैलोरीज आप ड्रॉप करते जाइए। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, इट इज a cycle, simple thing. You increase your activity level, you start decreasing your calorie intake, you will see changes. Simple. Okay, now I want to talk about something which is I think important for everyone. कई लोग होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, उनका जैसे आपने बोला का वेट स्टैग्नेंट हो गया एक टाइम के बाद। अब कई लोग होते हैं उनका इंचेस लॉस भी नहीं हो रहा है, वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। तो व्हाट आर द टिप्स जिससे उनका वर्कआउट जो है थोड़ा सा इफेक्टिव और हो सके? Okay. See, जो आप बात कर रहे हो, that is called plateau. That is something that cannot be so easily defined. Because when you're a newbie जिसको कहते हैं, जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, कोई वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं किया, and वो स्टार्ट करता है, so his body, her body starts reacting metabolically very fast, and उनको initial changes बहुत जल्दी दिखेंगे, and वो newbie gains कहते हैं, newbie fat loss कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, but वो initially आपको changes बहुत जल्दी दिखेंगे, but उसके बाद आपकी बॉडी आके एक stagnant weight मेजरमेंट, हाइट, व्हाटएवर इट इज, उस पे आके हॉल्ट हो जाती है, बिकॉज इनिशियली आपके बॉडी ने उस रेस्टिंग फेज से एकदम से एक्टिविटी फेज में आने पे मेटाबॉलिक चेंजेस किए, उसने वो अडैप्ट कर लिया, एज आई सेड। सो नाउ यू आर ऑलरेडी ईटिंग लेस, यू हैव हाई एक्टिविटी लेवल्स, यू स्टिल नॉट चेंजिंग। उसमें क्या क्या फैक्टर्स है? आपके बॉडी का वाटर लॉस हो सकता है, वाटर गेन हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन मेजर ऑन अ वेइंग स्केल या आप मेजरमेंट्स के साथ, it happens internally. So that is why it is said कि आप डेली वेट चेक करने से आपने सोचा कि एक दिन 70 kg है, अगले दिन मेरा 68 हो गया, नेक्स्ट दिन 74 हो गया, so it is always calculated as average कितना है आपका usually entire week का, because कभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, कभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है, कभी आपने कार्ब्स ज्यादा खाए हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स ज्यादा हैं, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है, कभी कम है, so it is an average that you have to see. What a person should do is see कि वो किस पॉइंट पे आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अपना बॉडी कंपोजिशन आप चेक करा सकते हैं, इफ पॉसिबल। कहीं से आपको कई वेइंग मशीन्स होती हैं जिसमें बॉडी कंपोजिशन आ जाते हैं आजकल। अच्छा, यू कैन, यस, सो ऑलवेज टेक photos of yourself, because what you cannot see on a weighing scale you can see in a photo. Simple. You may be gaining muscle, you may be gaining fat, you may be losing fat, you may be losing water. It can only be seen in a photograph or a proper body composition machine. आप उस पर चेक करिए, नहीं हो रहा है, नहीं आपको समझ में आ रहा, यू रीचेक योर डाइट, व्हाट यू आर ईटिंग। अगर आपका प्लेटो हिट हो गया है, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू, बिकॉज योर बॉडी इज, फॉर एग्जांपल आप यू आर ऑलरेडी ईटिंग वेरी लेस, ओके, एंड यू आर एट अ वेट दैट इज स्टैग्नेंट, बट यू वांट टू ड्रॉप डाउन मोर, व्हाट यू कैन डू, लाइक आप क्या कर सकते हो? बॉडी, यू कैन नॉट ईट और कम, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग feasible. आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा कम भी नहीं देना चाहिए। You do is you increase now. Okay. You increase the calories back again. It is always 200-300 calories के आसपास आप बढ़ाओ, 2-3 weeks के लिए बढ़ाओ. Your body will get confused. कि I was getting low, I was sustaining at that, okay, and now I am getting more. You increase it for 2 to 3 weeks. आप देखो कि उसमें आपका fat loss हो रहा है, muscle gain हो रहा है. What is happening? If your weight remains the same and you think that आपके inches कम हो रहे हैं, muscles improve हो रही हैं, that means your body is now gaining muscle. Okay. After 2-3 weeks, your gain reduce it back to 200-300. So you keep your body confused and not let it adapt and stay at a single point. अच्छा, हाँ जी, आप उसको जितना चेंज करते रहोगे, alternate करते रहोगे, because जब आपका stagnant हो गया, that is your maintenance. Your body is now entered maintenance. let's say I've been doing aerobics for a week, or for like, let's say 3 months. I am doing 40 minutes of aerobics every day. But now there's this time that मेरा plateau आ गया है and there's no reduction. So changing the type of exercise will help. Correct. Because what happens is aerobic exercises and anaerobic exercises both are different. Both target different portions of your body. Both happens at the same time. But अलग-अलग effects होते हैं दोनों के. Right. So
aerobic is like presence of oxygen. You're doing cardio is basically known as aerobic exercise. Any type of cardio. Yeah. What happens is there is a limit to what your body can do with aerobic exercises. Right. So when you reach that limit, for example, your body has already lost 10 kgs, you can say. Okay, you've lost 10 kgs doing aerobic exercise. Now what the body is doing, it has very less muscle mass. आपकी muscle mass नहीं है. Okay. So your body is now, recomposition has happened and your body is now going to lower the metabolic rate. आपका base non daily metabolic rate जो पहले था, for example, it was 1200 calories का, आपने 10 kg lose किया, आपकी body has now adapted 900 पे आ गया. तो आप 900 से कम तो नहीं खा सकते, 900 से ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते. So it is now going to be at a point कि आप वहाँ पे stagnate होते हो. Then that is maintenance calories. Okay, in order to increase that metabolic rate, आपकी body में muscles होनी चाहिए. The higher amount of muscles that you have in your body, the more the metabolic rate is going to be there. तो जितना high आपका resting metabolic rate हुआ, normal जो आपका, for example कहते हैं लोग कि मैं बैठे बैठे भी मेरे को weight नहीं चढ़ता, किसी को तो बैठे बैठे weight चढ़ता है. क्यों? क्योंकि जिसको बैठे बैठे weight चढ़ रहा है उसका metabolic rate slow है, और जिसको नहीं चढ़ रहा उसका metabolic rate fast है. Metabolic rate fast ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनमें ज्यादा muscle mass होता है. So then आपने cardiovascular exercises करी, you reach the point. Now your body needs to grow muscle to move far. Like उस point से आगे बढ़ने के लिए your body needs to grow muscle. That does not mean आपने बल्कि physique बना लेनी है. It is not going to happen overnight. It is not going to happen in 6 months. It is not easy to gain muscle. Right. Simple. It is not easy to gain muscle. कि people think नहीं हमने weight उठा लिया, हमने 2 महीने weight उठा लिया, हमारी muscles आ जाएंगी. नहीं. It is very fast to gain fat and very hard to lose fat, and it is उतना ही hard to gain muscle and very easy to lose muscle. So आपने जब 10 kgs very well. I can't lose 10 weight. No, so when you lose 10 kgs, it is not completely fat. It is water, muscle, and fat. Right. Some part of it. Majorly muscle, because body is designed in a way. Fat is like backup storage. Muscle is primary usage. Right. So you need to increase the muscle mass in your body. वो कैसे होता है? Resistance training, weight lifting, जो भी कह लो आप उसको. You need to add some type of resistance training. ज़्यादा नहीं, थोड़ी से start करें. Because what happens is that is a combination of anaerobic and aerobic exercise. Right. Resistance training is a combination. जब आप resistance training कर रहे हैं, जिसको typical में जिम जाना कहते हैं या weight lifting कहते हैं, वो combination होता है. Right. Aerobic और anaerobic का. आप पहले क्या करते थे? सिर्फ aerobic कर लेते. So now you're doing something that is a combination of two things that is going to do more energy burn. Hence आपकी body का everything will change, improve. That makes so much sense now. A lot of people I think will be inspired. आपने जैसे कहा कि आप कोविड से रिकवर हुए हो, तो जिन लोगों का स्टैमिना कम हो गया, बिकॉज जो नॉर्मल लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका स्टैमिना तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, दे कांट इवन वॉक अ फ्यू स्टेप्स. सो व्हाट आर योर टिप्स जिससे वो थोड़ा सा अपना स्टैमिना बिल्ड अप कर सकें और थोड़ा सा यू नो दे गेट बेटर एट व्हाटएवर दे आर डूइंग? Right. So see, I have done some research on this, and whatever like I have been informed by my sources, आप अपनी capacity पहले खुद judge करिए. Don't go on somebody's videos or any kind of YouTuber logic कि नहीं आप ये कर लो वो कर लो. नहीं, आप पहले अपने आप को judge करो. What is your lung like? क्या situation है आपके lungs की? What is the lung capacity? Do you have trouble breathing when you're walking? And if you have, do not exercise at all. Just do your breathing exercise till your breathing and your air intake and you feel is very normal. So for example, when मेरे को COVID था, so I was like 10 days into getting affected. I was like, I'm feeling okay and I wanted to exercise. Like I'm like, okay, I'll start doing some workout someday maybe. And the first burpee that I tried, I was like, okay, my body is not able to do it. मैंने कहा चलो ठीक है, burpee is something very tiring. I'll do normal push-ups. I was not able to do 2 push-ups also. So my body, I was feeling very okay. My mental state was like, I can exercise, but my lungs were like, no, आप नहीं कर सकते. So I understood that point कि नहीं करना चाहिए. Then I went back and I consulted a few people that are in the same field. They were like, you have to first check on your own that आपकी body is in what shape. किसी की बहुत अच्छी थी, किसी का maintain हो गया, किसी को कम हुआ COVID seriousness, किसी को ज़्यादा हुआ.
तो आपको खुद जज करना पड़ेगा that the time your lung capacity is not normal, do not exercise, just do breathing exercise, normal stretching if it is okay for you, that is it. Do not be in a hurry to hit the gym because your body is not recovered. आपने रिकवरी से पहले उसमें कुछ और कर लिया तो it will hamper it, कोई healthy effect नहीं होगा उसका. So thank you so much for your time. That is what I would suggest. This is really helpful, Sure. and I would suggest people to go and follow you on Fit to Fat official page. I will also give the link in the description box. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. I hope this video helps you all. If you like it, please subscribe, hit the like button and the bell icon. Thank you.